करते हैं आप सभी का युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन का ये है सो कॉल्ड सेमीफाइनल, यानी कि कहा जाए एलिमिनेटर नंबर 6। ये है वो तख्तोताज जिसको यहाँ पर लेने आ रही हैं ये सभी टीमें। बट सबसे पहले बताना चाहेंगे हूं नहीं हुकार है, दम नहीं दमदार है। ये विंटर एडिशन असल मायनों में बड़ा धमाकेदार है। हम अपने फाइनल के कारवे पर बढ़ चले हैं और ये है पलनी बनाम मुरथल मैग्नेट, सबसे बड़ा मुकाबला। और जानेंगे इस मुकाबले में कौन सी बड़ी टीम कौन सा बड़ा खेल कर पाएगी। आज के मुकाबलों की बात करते हैं। पलनीटस्कस बनाम मुरथल मैग्नेट, जो इस मुकाबले में जीतेगी 2 या 3 दिन के ब्रेक के बाद हम्पी हीरोज आज फिर से आ रही है फाइनल में। देखते हैं किसके साथ भिड़ते हुए दिखेंगी। रोड टू फाइनल की भी बात कर लेते हैं। चलिए, एलिमिनेटर 4 आप सभी ने देखा जिसमें जोला वीरज बाहर हुई। एलिमिनेटर नंबर 5 में रावली वहां पर बाहर जाते हुए आपको नजर आई। एलिमिनेटर 6 है पलनीटस्कस बनाम मुरथल मैग्नेट, जो जीतेगा फाइनल तक वहां पर सफर अपना तय करेगा, चमचमाती हुई ट्रॉफी की तरफ निकल जाएगा। कौन होगा वो, कैसे यहां पर आगे की तरफ जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। और हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं। इस एडिशन में अभी तक भी मुरथल मैग्नेट्स ने पलनी के विरुद्ध एक टफ फाइट नहीं दी है। तो क्या आज शंकर सुधाकर को रोक पाएंगे? क्या आज संजीवी का कहीं तोड़ निकल पाएगा? चलिए जानते हैं सबसे पहले एलिमिनेटर सर से कि वो कैसी तैयारियों के साथ आ रहे हैं। नवीन, आपके पास चलते हैं। Thank you, Harshit. And this is the Eliminator number 6. It's the virtual semi-finals, and I have Mr. Eliminator6 alongside with me, the coach of Palanikaskas. Eliminator6 first தமிழ்லயே கேட்டுருங்க. இன்னைக்கு வந்து ஃபைனல்ஸ் ஆட ரெடியா? நைட்டுக்கு ரெடி சார். எவ்வளோ ரெடியா இருக்கீங்க? ஏன்னா ஒரு பிரேக்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க. So how well prepared you are அப்படின்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். 2 நாள் கேப் எங்களுக்கு, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபைனல்ஸ் ஆடுவோம். So he says 2 days of gap has helped them a lot. So முர்த்தல் மேக்னெட்ஸ் கூட உங்களோட அந்த ஒரு ரன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, வெற்றியோட பாதை அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் தோக்கவா இல்லை அவங்க கிட்ட 3 மேட்ச் தொடர்ந்து ஜெயிச்சே வந்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ஒரு வின்டர் எடிஷனில். இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் பிளான்ஸ்? நேற்று மேட்ச் பார்த்தீங்களா அவங்க மேட்ச்? நேற்று நைட்டு டீமாக உட்காந்து எல்லாம் மேட்ச் பார்த்தோம். கொஞ்சம் நிறையா பிளான்ஸு, அவங்களோட ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுருக்கோம். அதை இன்றைக்கி கிரவுண்டில் நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். Super. He's very, very well prepared, and he saw the yesterday's match as well, what Murthal did, and now he's all ready to execute eliminator number 6. That's what it is. Finally, before I let you go, all the very best. இன்னைக்கு சுதாகர் விளையாடிடுவாரா? 300 தாண்டிடுவாரா? கண்டிப்பாக தாண்டிடுவார். Thank you, Eliminator6. So that is what it is. I was just asking whether Sudhakar will cross the 300 mark. He said yes, definitely he will. तो हमने कहा था ना, ये हूं नहीं हुकार है। जिस तरह से मेंटली स्ट्रांग आज फिर से आपको एलिमिनेटर सर और पलनीटस्कस नजर आएगी, देखकर बहुत मजा आ जाएगा। पर चलिए, जो अक्सर मेंटली स्ट्रांग आपको क्वालिफायर्स एलिमिनेटर्स में नजर आती है, उन कोच की तरफ आपको ले चलते हैं। यानी कि ले चलते हैं मुरथल मैग्नेट से कोच यहाँ पर नवीन के साथ है, मोहित हुडा साहब। क्या बात हुई है नवीन, आपसे जानते हैं। Thank you, Harshit. And yes, we have the expression man with me, Mohit Huda साहब. Expressions के लिए माने जाते हैं, लेकिन कबड्डी के लिए भी बहुत माने जाते हैं। कल वो 2 मिनट जब बाहर बैठे थे, कितना मतलब आपका दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं सर, दिमाग में यही चल रहा था कि मैच जीतने चाहिए। उस 2 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैच में विन होनी चाहिए। और कल वीरेंद्र का इतना अच्छा पारी, मतलब जो पूरे सीजन में फॉर्म में नहीं थे, अभी कल इतने उभर के आ गए, वो कैसे हुआ? मतलब वो हमें पता है किस टीम का डिफेंस कैसा और किसके खिलाफ किस रेडर को ज़्यादा रेड करवानी, हम उसी हिसाब से प्लेयर ने खिलाओ जी। और उसी हिसाब से हमें पता था कि उस टीम वाले डाई ज़्यादा लगा रहे हैं और इसको डाई बहुत कम लगती है, तो इसलिए इसको चलाया था। और मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगा जो एलिमिनेटर से पूछा, आज रात के लिए फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल फाइनल खेलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। लवली। सो सुधाकर के खिलाफ या सनमुत्तु के खिलाफ या इवन मुकेश खंडन के खिलाफ कुछ प्लान्स आपके डिफेंस में? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ लाइव में नहीं बताए जाएंगे। प्लान बिल्कुल तैयार है टीम का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Superb. That is what the coach not letting us go anything. All the very best, Mohit Huda साहब. So we are all set for the eliminator number 6, and this is going to be an epic encounter. ओके, तो तैयारियों के साथ आ रही है यहाँ पर दोनों ही टीमें। कैसे रोकेंगे पलनी और सुधाकर मुकेश कन्नन को, ये आप सभी को बताएंगे। पर चलिए, अभी जिस तरह से हमने बात की है कि अभी समय किस चीज का आ चला है, दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का, तो चलते हैं दोनों ही टीमों को मैट पर इनवाइट करने। बामुलाइजा होशियार आ रहे हैं साम्राज्य तमिलनाडु से, ऊंची चिंगाड़ लिए तशरीफ ला रही है पलनी टस्कर।
साम्राज्य हरियाणा से दहाड़ते हुए अब तशरीफ ला रही है हमारी इनॉग्रल चैंपियंस मुर्तल मैग्नेट। Thank you, Harshin, and that is a real big welcome for this eliminator number 6 for both the teams, because this is the semi-finals. The winner of this will play the Humpy Heroes tonight, and that's a big match that's coming up, the finals of the winter edition of the Yuva Kabaddi series. But Palani Tuskers in front of us, yeah, Velavan and Sanjeevi. Now that right corner, again there's a change, and Sanjeevi will be cornering on that occasion, as Masanamuttu and Stromy Sudhakar and Mukesh Kannan will be there for the raiding responsibilities. And Mugilan and Saktivel comes in as that right cover position as well. So there is a lot of changes and a lot of differentiation happening in that cover position. But Harish, Dansekar, Prabhakaran, Hariyarasudan and Gokula Kannan will be there in the substitution lines, along with coach Ilavarasan and manager Krishna Yadav. Looks like they are going Raider heavy and having a very light breakfast, not a heavy breakfast. Arshit is with me. Good morning, Arshit. या गुड मॉर्निंग नवीन। और देखिए लाइट करना भी था, क्योंकि ऐसा मुकाबला अगर हम करने जा रहे हैं तो हैवी से वहां पर बात बनेगी नहीं, और आज जो टीम वो लाइट प्रेशर लेगी वो इस मुकाबले को यहाँ पर जीतेगी। पर चलिए मुर्तल मैग्नेट्स की यहाँ पर बात करते हैं। मनदीप कुमार फिर से माइंड ब्लोइंग प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। मोहित नरवाल, नवीन नरवाल ये नवीनीकरण लेकर आए हैं, कवर्स बहुत अच्छा खेलता है। साहिल नरवाल ये है आज के वो खिलाड़ी जिन पर सबसे ज्यादा दारमदार होगा। पर पिछले मैच में जिस खिलाड़ी ने स्टेप अप किया है वो है वर्सेटाइल वीरेंद्र सिंह, बट उससे भी ज्यादा किस पर दारोमदार होगा? सुधाकर को रोकने का वो लेफ्ट कॉर्नर आर्यन कुमार और शंकर कुमार, ये दो कुमारों की जोड़ी यहाँ पर क्या सुधाकर पर लगाम लगा सकती है? साहिल, लव गालियान, अमित फोगाट, शुभम राठी आपको सब्स्टिट्यूट्स में नजर आएंगे। The way yesterday Aryan Kumar played against especially Jai Bhagwan, that shows that he is all set. And also on that left corner, you will have to be really wary about Shankar when the left raider Sudhakar goes in. Because on that right corner, Shankar, yeah, he got what? 4 points against Jai Bhim. So that is the Swaraj Tractors 296 there for the Stromy Sudhakar. Swaraj Tractors top 3 raiders, and yes, we will always be missing Arjun Rathi. But nice to see that he sealed that second position and Parvinder Pura on that third. And I asked Ilavarasan that yes, will he cross the 300? And Ilavarasan said yes, very easily, and even in the first half. So let's see, Stromy, he's got plans for this eliminator number 6. जी फर्स्ट हाफ में। और नवीन इसकी प्रेडिक्शन भी लगेगी कि आपको क्या लगता है कितने मिनटों के अंदर ये वो 4 पॉइंट लेकर आएंगे? बट ये बिल्कुल खिलाड़ी डिजर्व करता है, जिस तरह से इन्होंने सॉलिड शुरुआत से की है और अंत तक लेकर जा रहे हैं। पर टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करते हैं, आइए स्वराज ट्रैक्टर्स किस खिलाड़ी में सबसे ज्यादा दम देखने को मिला है? आशीष सहदेव मलिक, ये सहते नहीं है, ये सहाते हैं विपक्षी रेडर्स को। 112 टैकल पॉइंट्स। दूसरे पायदान पर गौतम, इन्हें हम निरंतर मिस करेंगे, बट कौन है तीसरे पायदान पर? कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आर्यन कुमार, 97 टैकल पॉइंट्स। क्या इस मुकाबले में गौतम को पछाड़ सकते हैं नवीन? Absolutely, there's all chances for that. And Raki Kumari, yeah, we were having a little discussion as well in the breakfast. Every referees were so happy unit across. There, Palani Tuskers actually winning the toss, and Shankar wanted the coin. He does not get it. Sanjeevi says we will choose the court that we are standing. So the first raid probably will happen from Mandeep Kumar or Virender. You might not know that because Virender yesterday gave a very big performance. But the Storm is in the house. 296 raid points, and this lad is from Palangannallur, Tirchi, and he is also pursuing his BA in history. So he's got a lot of history behind him. He's made history in the Yuva Kabaddi Series Winter Edition. And also I'll tell you something, he is the 5th son for the parents and 5 elder brothers. 5 elder brothers itself, they form a Kabaddi team. Everybody plays Kabaddi. We will talk more about that. एक्चुअली चलिए अब यहाँ पर इस खिलाड़ी की बात करते हैं। साहिल नरवाल, ये हरियाणा की शान है और कई सारे नेशनल्स में आपको खेलता हुआ नजर आ चुका है। काजीरंगा से इन्होंने शुरू किया था युवा कबड्डी सीरीज में, बट 11 मुकाबले इन्होंने खेले हैं। 133 रेड पॉइंट्स है और 70 के ऊपर रेड स्ट्राइक रेट आपको नजर आती है, लगभग 72%। ये बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है और ये खिलाड़ी पिछले मैच में थोड़ा सा शांत रहा था, मुझे लग रहा था वो आग बबूला होने वाला है। ये वॉल्केनो की तरफ फट सकता है इस मुकाबले में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पलनी का डिफेंस।
Absolutely, and also more importantly, Shaktivel and Mugilan, that combination as Ilavarasan is all set. Looks a little, hesitant as the names will be interchanged. Onto our right of the screen is Ilavarasan and onto our left is Krishna Yadav, the manager. But yeah, it looks a little tentative and he has to be because he is facing up against the man who knows how to win those eliminations. या ये अच्छी तरह से जानते हैं मोहित हुडा साहब, ये देखिए अनुभवी भी हैं, जरूर इनके एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं। पुष्मिता आज वहां पर है, यानी कि पुष्मिता को निरंतर मौका मिल रहा है वहां पर, काफी पसंदीदा टीम मैनेजर बन रही है, अच्छी बात है। बट कौन पसंदीदा टीम है, आइए उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। पलानी टस्कर्स 24 मुकाबले खेली है, अपने डेब्यू एडिशन में नवीन ऐसा प्रदर्शन कि ये मार्क जरूर छोड़कर जाएंगे। 18 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला टाई भी खेला है। I'll tell you what, all these players of Palani Tuskers are well educated. I mean, they're pursuing something which I was not even imagining. Because you know what, Masanamuthu is doing his MA in economics already. And also Sudhakar is doing his BA in history, as I mentioned. And also Sanjeevi has been doing his BA in arts as well. And there is a BSc graduate. There is one person trying to get into the MSc standards. Wow, that is awesome. But yeah, Murtal Magnets, they have got the science right in the matches because yesterday their zoology, chemistry, biology, botany, everything worked out against a very, very strong team yesterday, and they had to go out, the Aravali Arrows, because the rating department actually did not work in the last dying minutes of the match. But today, it's a different game, it's a different day, they're facing a different opposition, and everything will matter on the Raiders because the defense of the Palani Tuskers kind of looks weak on the paper. I'm just saying weak is because they don't have a proper right corner. We'll see how this Raider heavy Palani Tuskers go about in this eliminator number 6. Let's get down to the countdown. And Harshit, any guesses who will start the first raid, Mandeep or Virender? आई थिंक मनदीप, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शुरुआत की थी और बहुत अच्छी शुरुआत की थी और मनदीप बिल्कुल दिख रहे हैं, वो भगवान को थोड़ा सा याद किया है और हम भगवान से यही कामनाएं करेंगे कि आज के 2 जो मुकाबले हैं वो हमें इतने लाजवाब देखने को मिले कि कबड्डी के फैंस दुगने हो जाए। वैसे बहुत बड़ी तादाद में है, इंटरनेशनली छा रही है, पर मनदीप बिल्कुल आपने सही कहा था नवीन की पलनी टस्कर्स का डिफेंस थोड़ा सा वीक नजर आता है ऑन पेपर, क्योंकि वो वैसे स्टेट्स आपको नहीं नजर आते हैं, किसी भी खिलाड़ी के बहुत लाजवाब नहीं आते हैं। इस बार मनदीप के लिए पहला अंक है, पहला अंक मुरसल के लिए है, एंटी ब्लॉक किया और मिड लाइन को क्रॉस किया। Yeah, Shaktivel on that right cover, anti-block working really well, did not get the angle right. Shaktivel, he should have had that a little more power and the dash, but now power, dash, storm, everything is coming in. And look at Shankar. Shankar is already, he is not even in the chain on that right corner. He has to go to Stormy Sudhakar. That's what he's all set for. And he goes in, suffered a little bit of a groin injury of the overstretch. And Virender there in that left in. He's going in for that ankle hold. But has he got him? Yes, he has. It's a striking from both the ends, and both the top strikers have started off in a well attacking the covers. क्या विश्वसनीय शुरुआत। देखिए यहाँ पहले वो लगातार शंकर की तरफ फुटवर्क दर्शा रहे थे, सेटअप करना, देखिए कबड्डी में सेटअप करना कितना आवश्यक है, उसके बाद जाकर लेफ्ट कवर को जाकर स्ट्रेच कर हैंड टच करना 1-1 की बराबरी है। नवीन क्या लगता है मुकाबला रेडर्स हैवी होगा या फिर डिफेंस हैवी होगा? I'm telling you something, it is once again Virender who will make a very big difference. Sahil Narwal also is a right rider, and you have Velavan on that left corner, so not a problem there. That is the issue. Whenever Virender comes in, he will be against Sanjeevi, and we know Sanjeevi is a good defender. He is not that he's not a very good defender, but for me, I always look at Sanjeevi as that great captain who will go in and raid and get you points. And today, if Sanjeevi has to stop Virender, it has to be completely out of the box. And now, is this a bonus? And yes, Sudhakar jumps in the stride and says, got the bonus. Sanjeevi also agrees with the bonus, and yes, he's got it. जी सब्र सब्र का वहां पर जो मीठा होता है बल वो देखेंगे ना यहाँ पर देखने को मिलेगा इन दोनों ही टीमों को। पर यहाँ पर वीरेंद्र बिल्कुल आपने सही कहा, नवीन की लेफ्ट रेडर हैं, राइट कॉर्नर के विरुद्ध जरूर संजीवी एक अच्छे डिफेंडर है, बोनस इन्होंने भी चुराया है संजीवी के नीचे से। दोनों ही टीमें 2-2 के स्कोर पर नजर आएंगी। कड़े मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, दर्शकों आपको हाई पैक एंटरटेनमेंट की गारंटी है। Yeah, again he is trying to invite Shankar for that diving ankle holds or thigh holds. Shankar is not yet attacked.
He's not even gone in. Goes in deep and now turns suddenly. Sudhakar on the swag. 299 now for Sudhakar. 299 पॉइंट यहाँ पर, एक और टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट ऑलरेडी ला चुके हैं और पहले हाफ में लगभग ये अपने 300 के मार्क पर छूने के लिए हैं तैयार। क्या लाजवाब सफर रहा है। पर चलिए साहिल नरवाल, इनका समिट राउंड अद्भुत रहा है। नंबर 4 जर्सी मुकिलन आए थे, बैक होल्ड करने का प्रयास था, साहिल का सही समय पर टर्न आया और मुकिलन के हिस्ट्री टैकल को इस बार उन्होंने नलीफाई किया। Did you watch what Sahil did? He actually turned as a left raider because the right corner is not so strong. And that is why Mukilan went in for the back hold. Idea was right, execution completely wrong by Mukilan. Outside the block line, you cannot stop Sahil. Now Masanamuthu. I'll tell you something, his great-grandfather's name is Masanamuthu. Oh. And his parents have named him after the great-grandfather. And I'll tell you, me and Masanamuthu share a very common thing. We both are from Presidency University. Okay, जब वो मसनमुत्तु इतना शाइनिंग स्टार्ट करते हैं उसका हमें पता चला है। बट मनदीप 3-3 की बराबरी पर स्कोर, लगभग यहाँ पर 4 मिनट का खेल होने वाला है और बहुत अच्छा कॉम्बो यहाँ पर नजर आ रहा है। दोनों ही टीमें अभी तक रेडर्स चले हैं डिफेंस में, अभी भी दोनों ही टीम के लिए पॉइंट नहीं आया है। मनदीप हल्का सा स्लिप हुए थे बट वो अपॉर्चुनिटी स्लिप नहीं हुई थी पलनी के लिए। एम्प्टी रेट क्या नजर आ सकती है? Looks like Velavan controls himself. Empty raid finally, and Sudhakar was really livid with how Velavan went behind and Mandeep suddenly turning. Now he's very clear, he's got Sahil Kumar on that right corner, so he can really go in, and we have seen Sahil attack from the in position. Now 300 does not happen in this raid. Oh, left cover, Naveen Narwal comes across with a double thigh hold and keeps Stormy out for the first time. और इस बार नवीन ने अपनी परफॉर्मेंस का डिस्प्ले किया है। देखिए इससे पहले नवीन को जाकर सुधाकर ने एक बार हैंड टच किया था बट यहाँ जाते ही डबल थाइस पर गए और नवीन और मोहित नरवाल की जोड़ी आने से यही मुरथल में फर्क पड़ा है। पहले एरर प्रोन हुआ करते थे, अब बहुत अच्छे खेल रहे हैं। बट अब वीरेंद्र, क्या फिर से अभी कौन खिलाड़ी राइट कॉर्नर पर है? शक्तिवेल, क्या ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है? बट सिर्फ 5 के डिफेंस में, क्योंकि राइट कवर की सख्त आवश्यकता होती है। नवीन में गोकुलक्कनन को मिस कर रहा हूं, पर वीरेंद्र इस बार क्या फिर से एक एम्प्टी रेड कर आएंगे? अगली रेड डू और डाई होगी मुरथल की। Absolutely, and I love what Sanjeevi did. He's a very good captain. He's captaining a team for the first time. He's never been a captain before. And once you're captaining in a debut season and you make sure that you put up such a performance, that is something really noteworthy. And he's also pursuing his degrees in various occasions because Sanjeevi also is from Salem. He's done his... is pursuing his BA Arts from Ganesh College, and also his dad is an ex-army man. Okay, right, so his dad is played for services, and that is how his kabaddi came to light. As Virender comes in, he has to put a lot of light on this do-or-die raid. Good that Sanjeevi is not on that right corner. You've got Shaktivel on that right corner, proper defender. The defense will not go to him is what I thought, but Shaktivel, he's made sure even Velavan is taken off. 2 important points for Virender, and he started well. और स्लगिश शुरुआत जरूर करते हैं। देखिए वीरेंद्र, देखिए एक ही जगह पर आपको फुटवर्क करते हुए नजर आएंगे बट वो पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही वहां पर डाई वाई 5 का हाउस था और थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर किया और तैयार हो सकता था, पर एक और मिलाकर 1 अंक के साथ 2 अंक वहां पर प्राप्त किए। मसनमुत्तु, सुधाकर का रिवाइवल कितना जल्दी आता है ये बहुत जरूरी है। मसनमुत्तु राइट रेड करते हुए आपको दिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर। क्या आर्यन कुमार का एंकल होल्ड के लिए तैयार हैं, किक लगाने का प्रयास है, ज्यादा अंदर उस क्षेत्र में गए नहीं है, फिर से अंदर जाने का प्रयास, पर ये एक और एम्प्टी रेड हो सकती है। साहिल कुमार शायद जल्दी जाएंगे, साहिल नरवाल वापस आ जाएंगे क्योंकि डू और डाई रेड आने वाली है। Yeah, that is what it looks like, but wants to have a piece of Sanjeevi on that right corner. Does not get it. Sahil will have to be really careful not to give away 2 points on this. It's a super tackle situation. Yeah, smart decision. Very smart. And Masanamuthu, actually, he also is... Wow, what is this? It's a do-or-die raid. Didn't they calculate the raids? Yes, they did. And Mukesh Kannan for the first time goes in. And in a do-or-die raid, gets a running hand touch on Aryan Kumar. Wow, what a raid. And also a little more on this raider as well. Because Shaktivel is from Vase in Chennai. And also somewhere Mukesh Kannan, I'll tell you, he's in the same place where Ilavarasan comes from. Ilavarasan also from Salem. And Ilavarasan is the first coach of Mukesh Kannan. And now that's a first tackle point for Mugilan. On that left corner, diving ankle hold, puts out Sahil Kumar. Palania fighting back.
जी पलनी वहां पर वापसी कर रहा है डिफेंस में, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट अंक यहाँ से प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साहिल जो कि वैसे एस्केप रूट ढूंढने में बहुत ही आतिशी हैं, बड़े अच्छे रहे हैं, पर इस बार वक्त ने उन्हें आजमाया है। क्या यहाँ पर इसी तरह से डिफेंस लगातार आजमाएगा? बट नवीन देखिए, इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से डू और डाई रेड में गए। पिछला मुकाबला अगर पलनी यहाँ तक पहुंची है तो मुकेश कन्नन, ऐसे जो मुकेश कन्नन आता है मैंने तो उसके आगे श्री जोड़ दिया है। श्री मुकेश कन्नन की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं जरूर, और इन्हें अभी तो काफी अपने को आजमाना है। और कहते हैं ना नवीन की हीरा सब में होता है, सिर्फ वहां पर शाइन करने की आवश्यकता होती है, तो ये अपने आप को अब शाइन कर रहे हैं। पर मनदीप थोड़ा सा सिर्फ लोड बाकी रेडर्स पर अपना दे रहे हैं, इनको भी ज्यादा प्रेशराइज अभी तक नहीं किया गया है। Yeah, he's playing within himself. That's nice. He's made sure that even yesterday against the Aravali Arrows, he did not go all out. We saw him how he was playing and containing himself in whenever it's needed. Only then he goes for the attack, and also allows Virender to do a lot more in that right flank. Now Sanjeevi comes in for his first trade. He's also the player from Salem, and also he spent 2 years in Punjab. That's why his Hindi is so good. Because his daddy was an ex-army man, he played for services, and dad was his first coach always, and dad said, if you want to play kabaddi, only then go for it. I'm not forcing you. If you like kabaddi, go play for it. And Sanjeevi said, yes dad, I will take it up and play. और क्या खूब खेले हैं, क्या खूब कप्तानी की है, डेब्यू कर रहे हैं कप्तानी में। और देखिए जब भारत के लिए डेब्यू किया था किसी बड़े टूर्नामेंट में, एक कप्तान ने थाला जिसे कहा जाता है, उन्होंने वो वर्ल्ड कप ला कर दिया था। क्या संजीवी यहाँ पर अपने डेब्यू में पलनी टस्कर्स को ट्रॉफी लेकर आ सकते हैं? वो साथ ही साथ वो चेरी ऑन द केक आप कहते हैं ना कि वो प्राइज मनी भी वहां पर आता है, जिससे कि कबड्डी के हर एक खिलाड़ी चाहे वो विलेजेस हो अलग अलग जगह जा सकते हैं। पर ये डू और डाई रेड है, यहाँ पर मुकेश कन्नन को क्या डैश कर दिया गया है। शंकर का क्या पहला टैकल है? Oh, that's a very strong dash coming in. No angle for Shankar. Look at this. Because he went in so close to the block line. Remember, he did not go away from the block line to dash the raider out. He went on the block line. So that is why that angle, even though there was no power, the angle was right from Shankar to put out Mukesh Kannan outside. Now Mandeep on a do-or-die raid. He has to get a touch point. He can't play within himself. He can't be contained. And Sanjeevi, watch out. He will come for you on the running hand touch. Yeah, the right corner not too strong for Palani Tusker. 7 seconds, 6 seconds. I think the defense is not going for him. Sanjeevi goes. And I said Sanjeevi shouldn't have been going. Sudhakar and Masanamuthu both were not happy with Sanjeevi's effort. जी यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए मनदीप पूरी तरह से तैयार थे और सोलो टैकल के लिए वहां पर चले गए थे राइट कॉर्नर से, तो ये ना प्रॉपर तरीके से वहां पर फॉर्म कर पाए। पर क्या ये सुधाकर का वो 300वां रेड पॉइंट की हुकार हो सकती है? थोड़ा सा संभल कर रेड करना चाहेंगे, सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके खेमे में मौजूद है। क्या इस बार हैंड टच लाने का प्रयास? नवीन नरवाल थोड़ा सा बचकर रहिएगा। ये सुधाकर है, क्या ये बोनस है? क्या ये 300वें पॉइंट का अंदेशा हो सकता है? थोड़ा सा डाइसी नजर आया नवीन। Very dicey, ankle hold, and the support comes in at the right time. Oh, support looked a little hesitant to come in, but then it came in at the right time. The bonus was not there, and the ankle hold from, look at that, Virender started off it, and then right corner Shankar. So 2 defenders actually going in against Sudhakar. So that is what he has to watch out for, as there is a substitution that's happening as Gokula Kannan comes in. Much needed. Really, and in a super tackle. Now I'll tell you something. Mukilan and Gokula Kannan, they both play for the same team. They both play for BVK team in their village, and they're both from SRM Chennai College. That is why that combination. Super tackle on. Can this be there? Wow, this is their struggle, and Mukilan is playing his life out. That's a super tackle. Whistle gone. Awesome. That is the friendship of the covers, and that is 2 points for Palani Tuskers in the defense. Getting things heated up now नवीन। देखिए यहाँ से फिर से गोकुल लक्कनन, इसीलिए हम उन्हें सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे। साहिल नरवाल की जब सभी तक हमें देखने को मिली है कि बिल्कुल एफर्टलेस रही है, बट गोकुल लक्कनन और मुकिलन ने जिस तरह से डायरेक्शन को बदला, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। ये कई डिफेंडर्स नहीं कर पाते हैं, बट अब पलनी टस्कर्स ने अगर ये ऑल आउट पुश कर दिया, अगर ये मुरसल के पक्ष में डाल दिया, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट की लीड अभी भी है मुरसल के पास। अब फिर से मसनमुतु आए हैं, क्या लेफ्ट कॉर्नर आर्यन की तरफ जाएंगे? क्या नंबर 69 को हैंड टच करने का प्रयास कर सकते हैं? Yeah, much needed. Now Shankar, can he get across? No, the second line of defense today with Murtal. It has been a fabulously well coordinated defense. Masanamuthu going in late, and look at that second line of defense. Aryan Kumar
if he was not there, and it would have been a super raid. But nevertheless, Masanamutu has to go back again. I think there will be a substitution. Oh no, timeout taken. Mohit Uda sahab. दाई मारा पक्का दम पैठ रहा है देख लिए भाई कैच होगी जब भाई मेरी सुन ना टूटा ना शेपा जी कोई जरूरत ना है उन मरे डर नहीं है भाई उन ना बाड़न है ना काडर है अगली में यू दूसरा ले लिया ट्राई सुपर टैकल लाओ जा पहला बताओ मंदी फिर कदे नहीं गए मैं लोग मैच ना बिगाड़ो दो बार कैच दिखाऊंगा सब बेटे for that super tackle. Yeah, both are from the same team. Remember, they've been playing together from the age of what? I think when they were in standard 6, they were playing together. Oh no, there is no Gokula Kannan. He's not coming. Saktivel is there. Saktivel with a frontal block. Now Mandeep with the jersey pull. That has happened. Both of them with the legs. I think this is wow, that's a one. That's a one which will be stopping the jump and the back hold from Mugilan. Wow, second super tackle, and this point should go for Mugilan even if Saktivel started it. And Mugilan is a zoology student. Look at the way he's managed the zoology on Mandeep. करेजियस फुल ऑफ बीन्स यहाँ पर वो डिफेंस नजर आया जरूर शक्तिवेल वहां पर देखिए नवीन ये जो क्षण था यहाँ पर जब वो मुकिलन आए ये देखिए सिर्फ शक्तिवेल के विरुद्ध छोड़ दिया और ये देखिए जिस तरह से बैक होल्ड करके फिर से डायरेक्शन में बदलाव किया है मनदीप की पिछले दोनों सुपर टैकल में मुकिलन का बहुत अच्छा कार्य रहा है और कार्यरत है पर शंकर का रिवर्स एंकल होल्ड संजीवी ने यहाँ पर माफ कीजिएगा वेलवन ने यानी कि हमारे वेलू ने यहाँ पर जाकर पॉइंट लिया है I'll tell you something, he's the most naughty kid in Palani Tuskers. He's the one who always talks a lot, and the reverse ankle hold of Shankar not working. And he's got a pet name for everybody. Velavan has actually given a pet name to everybody. He calls Harish Rocket Harish, and he calls his elder brother, Harish's elder brother, as Jet Pasupati. His name is Pasupati. He's named him as Rocket to the younger brother, and the elder brother is the Jet. Imagine. So he's a very, very naughty kid. And he's gone in and got that very, very important equalizer. And more importantly, Shankar is on the bench. Oh my God, look at this. Mohit Uda साहब. और देखिए मोहित हुडा साहब आपने वो निकनेम्स की बात की तो शंकर शंकु के नाम से जाने जाते हैं वो मनदीप उन्हें कहते हैं और मनदीप अब वहां पर मैट पर मौजूद नहीं है साहिल नरवाल है बट मुकेश कन्नन 10-10 की बराबरी पर बहुत समय के बाद ये स्कोर अब बराबरी पर नजर आ रहा है शंकर नहीं है राइट कॉर्नर पर आपको मोहित नरवाल नजर आएंगे साहिल नरवाल पर आपको डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी 10-10 की बराबरी पर स्कोर एक ही पॉइंट आज साहिल नरवाल को मिला है Yeah, and also in the previous raid, I would have wanted Mukesh Kannan to try well. That's a lovely block, Saktivel. You cannot escape from that block, and that back hold also turning. And Sahil could not escape that. प्रतिक्रियाओं में बदलाव हो रहा है मोहित हुडा साहब ये बैक होल्ड लगातार साहिल को लगातार बाहर भेजना अद्भुत काम शक्तिवेल बहुत अच्छा डिफेंस शुरुआती समय में डिफेंस ने आराम से शुरुआत की नवीन बट अब यहां पर अटैक करने जा रहा है 2 सुपर टैकल उसके बाद बड़े टैकल्स मुकेश कन्नन क्या इस बार रेड में प्रयास करेंगे एक पॉइंट इन्हें भी रेड में मिला है बट मुझे लगता है क्योंकि अभी सिर्फ डिफेंडर्स मौजूद हैं एक और खिलाड़ी बाहर है आर्यन कुमार बाहर है ये मेरे लिए कुबेर का खजाना ओपन हो गया है पलानी टस्कर्स के लिए सोने पर सुहागा डबल अपॉर्चुनिटी My God, that was such a big error from Aryan Kumar. Not at this occasion when the scores are so leveled. Raki Kumari also has come in with a small little discussion as Mr. Verma. He's the main referee today. He's from Himachal. And there, where is Aryan's legs? In that frame, yeah, his right leg is actually touching the end line. It's not been out there. He has to stop there. Oh. बहुत ज्यादा The next frame is a big error from Aryan Kumar. और नवीन क्या वो उन्हें अंदेशा नहीं था कि कहां वो पीछे लाइन है क्योंकि इतनी बड़ी गलती आर्यन क्योंकि एक परमानेंट लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी हैं तो पूरी तरह से कभी कभार आप वो शायद स्टेप्स भूल जाते हैं जैसे हम स्टेप्स की बात करते हैं तो कितना आपको पीछे जाना है 2 पॉइंट ओ 2 अंक क्या साथ ही साथ नवीन भी बाहर गए हैं नवीन हमने देखा वो व्हाइट लाइन को उन्होंने टच किया पर शायद एम्पायर का कहना है रेफरी का कहना है आइए देखते हैं उनके लेफ्ट लेग की तरफ ध्यान दीजिएगा टच जरूर होगा पर क्या बाहर गए हैं आर्यन जरूर अगले फ्रेम में आपको पूर्णतः बाहर जाते हुए दिखेंगे क्या वो थोड़े से हॉरिजेंटल कैमरे से पता लगेगा यहां से क्या थोड़ा सा लग रहा है कि नवीन की हल्की सी एड़ी कट रही थी और तुरंत एम्पायर ने अपना हाथ खड़ा किया था Can you believe this? It's a double whammy. It's a double error. Not right. Proper defenders making that error. That is the pressure of the semi-finals. Oh my God. And now Virender has been napped out. Even the jump does not work. And Mugilan comes in. I think that's the high five.
And Arvind actually is celebrating there. वो दर्शकों की भीड़ में मुझे कोई ऐसा नजर आया जिसे हम लगातार ढूंढ रहे थे यहाँ पर मुकिलन, पर ये सभी की भीड़ में से किस तरह से यहाँ पर काम करते हुए नजर आए हैं। एक और बड़ा टैकल है और अब ऑल आउट के बहुत ज्यादा करीब है और ये सुधाकर का 300वां रेड पॉइंट है। जो पसीने की स्याही से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं नवीन। And did you imagine he will get the 300 and so easily in a surrender rate? You had to put so much of an effort for 299 and to get that 300th rate point, it's a surrender rate. So that means in Kabaddi and life, if you do well in your initial stages of your life, the later stages will get very, very easy. As Ilavarasan comes on, let's listen to him. அவனுங்க இன்னும் ஒரு போனஸ் நம்ம கிட்ட வைக்கல, அதனால கொஞ்சம் ஃப்ரீயா நில்லுங்க. போனஸ் ஒன்று போனா எப்போ கிடைக்குதோ தேர்ட் ரைடு மட்டும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் டிஃபென்ஸ் வீக் தான், கொஞ்சம் ஸ்கோருக்கு இழுத்து பாருங்க, மைனஸ்ல இழுத்து பாருங்க, ஸ்கோர் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். தேர்ட் ரைடு டீப் ஆடலாம், ரெண்டு ரைடு சும்மா மைனஸ்ல இழுத்து பாருங்க. டிஃபென்ஸ் அட்வான்ஸ். Can you believe that data? My God, Ilavarasan is counting. There is not even a single bonus point for the Murthal's Raiders tonight. So in this game, correction. So when he says that there's no bonus, it's okay for them to take the bonus and go away. We are leading by 7 points. चाणक्य इलवरसन, my God, the man from Salem. पर वो शायद एक बोनस तो वीरेंद्र ने चुराया था जब वो दूसरा अंक वहां पर लिया था, बट उसके बावजूद कोच साहब कितनी अच्छी धैर्य के साथ, देखिए धैर्य बहुत जरूरी होता है क्योंकि टीम वहां पर जोश में होती है और धैर्य और जोश की जब एक साथ समावेलन वहां पर होता है हमेशा एक प्रभावित कर देने वाला कबड्डी का खेल नजर आता है। फिर से शायद वीरेंद्र ने बोनस दिया है, कोच ने कहा था कि आप बोनस दे सकते हैं, टच पॉइंट मत दीजिएगा, बट अब सुधाकर चाहेंगे वो 300वां पॉइंट कैसा भी आया हो, 300वां एक पॉइंट जल्दी आए और बहुत अच्छे अंदाज में आए क्योंकि 7 का हाउस है। शंकर वहां पर चेंज छोड़कर खड़े हैं। Wow, that's 301. Turn, tumble, and then the outward turn. 1 point. It was missing in Sudhakar's game, and the turn is now working. There, the cover once again not happening there from Naveen Narwal. No angle, and again Strom, you can't do that. 301, and I think that hairstyle is the Strom that has just come in and stayed here in Puducherry. And it's a big 7-point lead, Harshit. And I'll tell you what Ilavarasan actually mentioned. Yes, the bonus is fine. They might have taken 1. But look at this. 391 raids, 301 points. 17 Super 10. So, in that 91 raids, I think Aravali Arrows and Periyar Panthers have shared 30-30 raids where they have stopped him. That's all. Apart from that, no other defense in this winter edition is able to stop the Storm. Yeah, they're just talking about Ilavarasan there. You remember Natarajan, the left-arm Indian fast bowler? As a left raider gets a point. 1 point. Ilavarasan and Nattu, what we call him, Natarajan, the left-arm fast bowler, they are very close friends. They come from the same place. Salem. बात है, यानी कि एक यॉर्कर किंग है, एक माइंड किंग है। देखिए इलवरसन साहब यहाँ पर, चलिए यहाँ पर रिव्यू की मांग की गई है पलनी टस्कर्स। देखिए 1.5 मिनट का समय शेष है। जी नहीं, मुर्तल मैग्नेट्स वहाँ पर शायद 3 अंकों की क्या मांग कर रहा है। Challenge is 2 point. Our decision 1 point. Please review. Yeah, Amar Verma, he just gave 1 point where Mugilan was there again, bending the head by the defender. That's not always advisable. As even Mukesh Kannan in contention, is it? Looks like, but still, Raider, is he gone out completely? Now that also will be watched by our TV umpire. Is the Raider gone out? Now Murtal Magnets are really desperate for these 2 points, and it's Mugilan for all you know, and probably they'll have to see that back again. Has Virendra been inside the lobby and coming through that midline? That's really important. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर क्योंकि 7 अंकों से पिछड़ी हुई है पलनी टस्कर्स के विरुद्ध मुर्तल मैग्नेट्स। कैसे यहाँ से वापसी की तरफ जाएंगे मुर्तल मैग्नेट्स को हम देखते हैं। इनका बाउंस बैक होता है वो बहुत कमाल का होता है, पर यहाँ रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है। मुकेश कन्नन का लेफ्ट हैंड शायद जरूर वीरेंद्र को छुआ था। वीरेंद्र ने यहाँ पर आकर दूसरा अंक प्राप्त किया है। ये देखिए एक बार फिर से देखते हैं, मुकिलन ने वहां पर डैश करने का जरूर प्रयास किया, बट यहाँ थाइस पर और उसके बाद मिड लाइन को जाकर क्रॉस किया वीरेंद्र ने। बट सुधाकर नंबर 5 जर्सी, ऐतिहासिक क्षण। और नवीन, जब जब कबड्डी की दीवानगी युवा कबड्डी सीरीज में लिखी जाएगी, मुझे लगता है इस खिलाड़ी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। Yeah, you said ऐतिहासिक क्षण. Yeah, why not? A BA history student, he's made ऐतिहासिक turns today. But why नवीन, इन्होंने हिस्ट्री क्यों चूज की? क्या इन्हें इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए थी? क्योंकि स्टैट्स में बहुत अच्छे हैं। ये देखिए स्टैट्स में और कुछ अंक जोड़ दीजिए इनके शायद।
Oh, that was very close. Oh. Shankar actually escaping that turn. And look at Mohit Udasab behind. And who's going in for the review? I think Palanitaskas. Is it no Murtal Magnets again? TV umpire, Murthal Magnet challenge, no bonus. Our decision bonus. Please review. Right, yes. There, Sudhakar was awarded the bonus on that occasion, but let's see if he's got it. It's not. I think he might have. Yeah, that's a perfect angle. That's a clear bonus. That is an example of how to take up a bonus. Landing foot over the bonus line, trailing foot in the air. Beautiful execution. ये एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था और ये दिखाते हैं, बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को सिखाते हैं कि कैसे आप और कहां पर जाकर बोनस लिया। लेफ्ट रेडर हैं बट उसके बावजूद बिल्कुल राइट इनके नीचे से कवर और बीच में जो जगह होती है वहां पर जाकर बोनस चुराना, रनिंग बोनस। अब देखिए ये सुधाकर 300 रेड पॉइंट्स कभी भी एक एडिशन में लाना, बट बोनस मिला है। बोनस आसानी से यहां पर मिल जाएगा। And I'll tell you what, Harshit, for our 300th man, or rather 300th king, I should say, of the raid points, he's already got 3 or 4 franchises calling him already. ओह, ब्लॉकबस्टर गिफ्ट नवीन, क्या बात है। आज यहाँ पर आपने ये फ्राइडे को फैंटास्टिक फ्राइडे के साथ शुरुआत करा दी है। Yeah, even before those trials and everything, because generally from Yuva Kabaddi series, if there is an exceptional player like Pardeep Dakardaya, you just get picked into the franchisee. So that is what Sudhakar has turned it around. And Ilavaresan was very happy in sharing that news with me. He said at least 3-4 franchisees have called me in person and then also with Sudhakar. And every time, see, that is how you need to respect your coach. And even if Sudhakar has got the calls directly, 1 or 2, he's gone in with Sudhakar and he's gone in with Ilavaresan and he's discussed with him, saying, Coach Saab, see, this is what I've been getting a call for. How do I go about this? You please guide me. See, that is what you need to do, and that is what Jai Bhagwan yesterday did not do. He should have listened. He should have listened to Sohan Lal Saab, gone in with bonus +1. Who knows? We might have had Aravli arrows today in front of Palanitaskas. Anyways, that's the first half story where it's only 4 tackle points for the Murtal Magnets and 7 for the Palanitaskas. And look at that, nothing to choose between the Raiders. It's only the tackle, it's only the war. It's that 2 super tackles where Palanitaskas are having their nose ahead by 6 points. Let's come back after a short little break and see if Mohit Udasab can spin a surprise and a fight back. And the Raiders might be struggling because the Palanitaskas defense have woken up, and like how. And Mugilan and Gokulakandan, that friendship of that team that they were playing from class 5 and 8 is what has started this. Murtal Magnet started it nicely, but the comeback Stromy is that Strom is back. That's the story. 300th point for him. First Raider in the winter edition, and also Vinay Virender. Right, we have not seen Virender Singh play like Vinay Virender, and I'm comparing him with him from yesterday. He's got 7 or 8 points already and keeping the Murtals in the hunt. So now I think Harshit, big time Mandeep steps up. जी, अब मनदीप का वहां पर काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पहले हाफ की कहानी में फिर से कौन अपना नाम वहां पर प्रदर्शित करेंगे। बहुत ही कामयाब रेडर बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इस खिलाड़ी की विविधता है। इस खिलाड़ी में देखिए, हम स्टॉर्म की बात करते हैं बट स्टॉर्म के विरुद्ध भी वहां पर तैयारी की जा सकती है, फोरकास्ट हो जाता है। बट यहाँ जिस तरह से विविधता लाते हैं, जिस तरह से मल्टी स्किल दर्शाते हैं और टर्न एक थोड़ा सा चिंताजनक विषय बन रहा था, वो टर्न यहाँ आए हैं। और एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं नवीन, मुरथल मैग्नेट्स के विरुद्ध अभी तक किसी भी टीम ने 4 या 5 अंक से ज्यादा, जब भी टीम जीती है, किसी भी टीम ने ज्यादा टैकल पॉइंट नहीं लिए हैं। और अभी ऑलरेडी पहले हाफ में पलनी 7 टैकल पॉइंट ले चुके हैं, तो क्या मुरथल के लिए अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। And that is why I say Mandeep should start well. And I think he's got the bonus in the first raid of the second half. Palanitaskas, remember, winning the toss. Oh, he's not got the bonus. He's not got the bonus. He's not happy. He's looking at Ilavarasan. Can they go for the review? But no, they don't want to waste that. And yeah, you told me that the forecast will probably there as the storm comes in, it can be stopped. But I'll tell you what,
most of the time the forecast goes wrong. And the storm actually comes in, even in the weather and even on your Kabaddi Series squad. But here, Virender Singh, Velavan just overran him. Small pause and then he gets through. जर्सी नंबर जी वीरेंद्र का ये 8वां पॉइंट है आज के मुकाबले में। डुबकी सही समय पर डुबकी आई, और वेलू अगर आपको चेन के साथ अगर यहां पर जाते तो शायद एक बेहतर विकल्प हो सकता था। स्वयं अकेले वहां पर होल्ड के लिए चले गए तो नवीन इनवर्ट टर्न या फिर आउटवर्ड टर्न दोनों हेल्प कर सकता था, पर उन्होंने डुबकी चूज की। ये भी बहुत अच्छी स्किल है। वो थोड़ा सा होल ज्यादा हो जाता है जब आप वैसे टैकल्स के लिए जाते हैं, बट यहाँ मसन्ना मुथु यहाँ पर क्या टच पॉइंट लाने का प्रयास करेंगे। कवर के खिलाड़ी अक्सर शिकार बनाते हैं, कहा ही था कि राइट कवर को जाकर टच किया, एक बार फिर से डबल डोज दिया और उसके बाद हैंड टच किया। Everybody from Presidency University, watch it out. One is in the com box, one is on the kabaddi mat. Right, and that is what Presidency has done to us. It's very close in terms of sports. It's supported a lot for players who play. And I'll tell you, I haven't been in the college for attendance. I've been in the ground for attendance. नवीन क्या अभी भी वो एडमिशन चालू है उसमें? Absolutely. Anybody who's a good player, any sport, cricket, kabaddi, football, whatever, come on. Presidency is there to support. Now, क्या वहां पर शब्दों से खेलने वाले को भी एडमिशन मिल जाता है? yeah, might be. And yeah, these guys actually should leave the mobile phone and watch out for the match. Masana Muthu on that occasion, see, I'll tell you why the actual meaning of that name Masana came in by saying that, yeah, it's a barren land. It's basically where we go back after we leave this earth. That is what in Tamil means Masana, and Muthu from there. Taking out a pearl from that place and having your great-grandfather's name, he is living up to that expectation. Why not? और निष्कर्षता कैसे निकाल पाएंगे मुरथल? आगे के रास्ते की हम बात करते हैं नवीन। मुरथल मैग्नेट्स के लिए आगे का रास्ता कहीं ना कहीं मनदीप की गली से होकर निकलेगा। तो मनदीप टच पॉइंट्स इन्हें लाने होंगे, इन्हें बताना होगा कि क्यों इन्हें माइंड ब्लोइंग कहा जाता है, और इन्हें अनुभव है, लगातार एडिशन खेलने का अनुभव है, बट अभी वो फिर से थोड़ा सा धीमी सटीक शुरुआत। नवीन, बतौर रेडर कितना वो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है जब आप कुछ मिनटों के बाद रेड करते हैं? क्या वो फुटवर्क थोड़ा सा वार्म अप करने में थोड़ा समय लगता है? Yeah, that's why I say it's all about momentum. Raiders, especially for Raiders, if there's a break, then in momentum or in the break day, that matters a lot. Oh, that was so close from Virender Singh. He was grabbing in thin air. Oh, that is a Chakravyu. And Sudhakar could not come out of that. Raider out. और एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रही थी यहाँ पर। वो छोटे से किड की भी एक्सप्रेशन अगर सुधाकर पकड़े जाते हैं, ये बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं आके। क्या साहिल गए थे सबसे पहले? नहीं, वहां पर शायद उनका ऐसा नजर आया कि उनके पैर थोड़े से वहां पर धस से गए थे, जिसके चलते पूरी कवर्स और कॉर्नर्स की जोड़ी वहां पर टूट पड़ी। Yeah, I'll want to give that credit for Aryan Kumar because Aryan Kumar came in. He wanted to go for the Dubki Sudhakar, but he forgot that his right leg was behind, been tackled out. This is nice. They've come to see Sudhakar. No wonder. I was talking to him before the match as well. He said, she wants a review. She wants a review. She's a supporter of Sudhakar for sure. क्या अद्भुत दृश्य है ये, सिर्फ कबड्डी के मैट पर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और दर्शकों का प्यार बहुत मिलता है साउथ। अगर हम बात करें, चाहे वो थाला हो, चाहे वो सुरेश रैना हो, CSK हो, या फिर वो खासकर फुटबॉल में भी, फुटबॉल में जिस तरह से अर्जेंटीना फैंस की अगर हम बात करें, बहुत सारे थे, पोर्चुगल के फैंस बहुत सारे हैं। और generally football becomes a part of Puducherry where the French colony was, but in Tamil Nadu it's more of Thala and Chinna Thala. Chinna Thala is vice captain, that is Suresh Rana, and Thala is of course Dhoni. But talk about another Thala and Talabadi that is happening, because in Pongal that's a big release that's happening. If you've seen the posters around in Puducherry, Harshit, when you travel to the the stadium here, the sports complex, you will see Ajit on one side, you will see Vijay on one side. Those are the two big giants who will clash in the Pongal release. Tunivu and Varis, both of them are coming together. Let's see who wins the Pongal. But now, this is more important than a door-eye raid. That has been nullified. It is not the Pongal. Sahil Kumar becomes the chutney there. ये देखिए, साहिल की जंप आई जरूर थी, पर उस जंप को उतनी ही तेजी से वहां पर लैंड भी कराया। और देखिए, प्रॉपर लैंड जंप आप अक्सर बहुत अच्छी लगाते हैं, पर नवीन हम अक्सर बात करते हैं कि वो आप कैसे लैंड करते हैं। अगर वो पूरी तरह से नीचे भी गिरते, ऐसा लगा मुझे तो दो खिलाड़ियों ने मिलकर साहिल को कैच सा किया वहां पर।
और क्या आप सीक्वल आ सकती है, क्या मुर्तल मैग्नेट्स वो बाउंस बैक का सीक्वल लेकर आ सकता है? कल भी उन्होंने अरावली के विरुद्ध जब अरावली ने उन्हें ऑल आउट किया था, पर आज आर्यन और शंकर उतने अच्छे इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। जब मोमेंटम मुकेश का मिड लाइन की तरफ था, जब जाकर टैकल के लिए देखा आर्यन ने, ये देखिए the thrust, look at this, he pulls Aryan Kumar towards him, Mukesh Kannan, and that's again a skill, the thrust force. He's utilizing the mat, pushing himself off and then going away, and I think you should call him Rocket instead of Harji there in the team. But also I'll tell you, everybody comes from that same village where it's in Salem, okay, and it is Chinnumampatti, that's what we call that, where Natarajan also is been coming in from. And I'll tell you why we speak about Natarajan and everybody is because Natarajan is the first player coming in from Salem to represent India in the international arena. And I was asking Ilavarasan, you are very close to him as a friend. Again, look at that, a Salem guy. Mukesh Kannan gets it. And I asked him, what has Natarajan done for Salem? Because I know Natarajan is building up a special sports complex, a cricket stadium in his own money. He's put out his own money. He's put out, a cricket stadium. But what I heard from Ilavarasan today was really very, very happy news. For 20 sports kids, he's invested for education, stay, and their sports. Natarajan is doing it, and that does not stop there. We've heard so many, things and news of having a good friend with you, and Natarajan and Ilavarasan are so close friends. I'll tell you what Natarajan has also done. He's actually put out life-saving business strategies for 10 of the friends. Is it Naveen? Yes, along with Ilavarasan. He's given business strategies. I mean to say, you should understand what strategies is. He's invested in their business. Somebody for a hotel industry and somebody for a transport industry. 10 of the close friends of Natarajan are surviving today in their own life, along with playing sports and also doing their own business because of Natarajan. अद्भुत नवीन, अद्भुत। ये मार्गदर्शक वो जीवन में जिस तरह से यहाँ पर इतनी छोटी एज में अगर नटराजन बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी सोच बताती है। क्योंकि देखिए, जैसा आपने बताया कि उनका खुद का एक स्टेडियम है और वो लगातार खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करते हैं, इससे पता चलता है कि खेल के प्रति उनका जो प्यार है, जो वहाँ पर विश्वसनीयता है, वो अद्भुत है और बाकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। अब मुकेश कन्नन 7 अंकों की लीड है नवीन। पलनी टस्कर्स कहने को वहाँ पर 13 मिनट के आसपास का समय शेष बचा है, पर हम पे हीरोज के कोच भी नजर आ रहे हैं दर्शकों में। आज रात को इन्हें खेलना है। किसके विरुद्ध खेलना चाहेंगे? क्या मोबाइल में आंकड़ों को लिख रहे थे नवीन, या फिर शायद चेक कर रहे थे कि किस खिलाड़ी के कितने पॉइंट्स हैं? मनदीप सिर्फ क्या बोनस के साथ संतुष्ट हुए हैं? टच पॉइंट लाना होगा, देरी नहीं करना चाहेंगे, जो कल अरावली ने किया नवीन। Very true. I've been saying this in the beginning of the second half. It is Mandeep. If Murtal Magnets wants to face Rajkumar Saab's Humpy Heroes tonight at 9 p.m., it has to be Mandeep. It is nobody else. Because yes, Virendra has done that. Stormy, has he got something to go for? Oh, that's going to be discussed. That will be discussed. There will be a conference. Raider out is the decision. I think it's been dashed out. ठोस मजबूत, यहाँ देखिए पहले जंप से निकल गए थे पर शंकर ने यहाँ पर अपनी ताकत का संचार किया, उसके बाद मनदीप आ गए थे। क्या मिड लाइन को एक क्षण भी वहां पर क्रॉस नहीं कर पाए। जरूर उन्होंने अपने राइट लेग को स्ट्रेच करके लॉबी में रखने का पूरा प्रयास किया, बट अगर सुधाकर बाहर है तो थोड़ा सा रिलीफ कहीं ना कहीं मुरथल को मिला होगा, बट रिलीफ नहीं लेना है, इसे फायर बैक कर मोमेंटम थोड़ा अपने पक्ष में लेना चाहेंगे वीरेंद्र। क्या वीरेंद्र टच पॉइंट की तरफ देखेंगे? क्या 5 अंकों की जो लीड है उसे कम करेंगे? शक्तिवेल, oh my God, that's a jersey pull. He's been torn apart. Oh my God, that's the pressure of the semi-finals. All right. 3 point. Super raid by Virendra. Not the right time for Palani, but yes, Murtal Magnets are storming back. They will be enjoying this. Why did Shaktivel go for that turn? Look at that outward turn, but then the anti-block also covering up. And he's taken off Velavan and Mukesh Kannan. Wow, match turning raid, Arshit.
एंटी द रेडर एंड जस्ट क्रॉस द मिड लाइन। यानी कि जो डिफेंडर को जिस तरह से उन्होंने वहां पर एंटी ब्लॉक भी किया, 3 अंक, और इसे मैं मिरेकुलस रेड कहना चाहूंगा यहां पर नवीन, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और आज फिर से वीरेंद्र, हम अक्सर प्रश्न पूछा करते थे, बूस्टर राउंड में इन्होंने अद्भुत किया, चैलेंजर में थोड़े से मायूस नजर आए थे, थोड़े से गुम से नजर आए थे, बट शायद कोच ने इनका 100% ऐसे मैचेस के लिए बचाकर रखा था। कल भी वर्सेटिलिटी दिखी, विविधता दिखी, और आज भी एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस आ रही, मैच मेकिंग परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं। Absolutely. And also he's got that spare jersey which is not probably his. That's fine. But now super tackle for Palanitaskas. They have to make sure something happens. I'll tell you what. Virendra has got a super 10 already, and he's got that lazy elegance of Arjun Rati. Every time the defense feels that he's not doing anything, and the defense goes to attack him, and there he's got that little bit of a turn, little bit of a jerk that he's got, and he's very wobbly. He's very rubbery in nature. You know, he just bounces off, Virender. That's what he does. Exactly like Arjun Rati. Similar way. Again, Arjun Rati is just a right raider, and I mean, he is a left raider. Correction. Arjun Rati also is a left raider. Virender also a left raider. So much of similarities. So the defense is actually been decisive whether they have to take it or no, go for the attack or no. But then the bonus from Matsunamuthu will help in the scoring. जी, 1 अंक वहां पर दे दिया गया है। लेफ्ट कॉर्नर आर्यन कुमार वहां पर नहीं गए। क्या कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? फिर से गोकुल लक्कनन आ रहे हैं। एक सुपर टैकल करने के बाद अब मसना को बाहर बुलाया गया है, और गोकुल लक्कनन पिछली बार जब आए थे सुपर टैकल कर दिया था कोच को। क्या इस बार फिर से संजीवी वहां पर है? ये भी सुपर टैकल के मास्टर हैं, बहुत सारे सुपर टैकल इस खिलाड़ी ने भी किए हैं, बट यहाँ देखते हैं संजीवी के साथ कौन सा खिलाड़ी वहां पर होगा। वीरेंद्र जा रहे हैं, सुपर टैकल का मौका है। क्या गोकुल लक्कनन की तरफ जाएंगे या फिर वहां मुकिलन की तरफ जा सकते हैं? पर मुकिलन थाईज होल्ड में अच्छे हैं नवीन। But I'll tell you what, even though there is just 10.5 minutes left, there's not a big lead. Virender should come back because he's just put in that super raid. He should just come back. He should not be greedy. He tried it. I will really say the try also is not required. 11 raid points today. He came back, lucky for Murtal Magnets, because after this raid, it's going to be a do-or-die raid there for the Palani Tuskers when they got the bonus. Correction. So even in the next raid, Virender can just try and make a comeback very soon. If he does that, he wants a timeout there. Virender wants a timeout. Probably he's going for it. Yeah. Timeout, Murtal Magnet. That's a good thing. Break in momentum. Break the adrenaline flow of the defenders in Palani. That's nice. He's just talking about the defense. Mohit Udasab. He's not even discussing with Virender. That's good. He's just saying be careful with Mugilan, 4 number. So it's Mugilan. You should just be careful with Mugilan when he goes to attack him. That is what it is. And he's good. Mohit Udasab in this occasion, he was very good because he did not talk too much to the raider. That's also very nice. He just said with the defense, if the raider comes in, go in with the chain tackles. Now, he can even come back on. This is what I feel. But if not, the next raid for Murtal Magnets will be a do-or-die raid. And we've seen Palani Tuskers do really well in the super tackles. But now there are 3 defenders. I think he should come back, Harshit. That's what I very, very strongly feel. Do not be greedy. It's okay. And reduce that 3-man defense. Very well done. You can push the Palani Tuskers into the all-out if there is a nabbing that's happening against Sanjeevi now. जी, पर नवीन, अब मैं डू और डायरेक्ट जब मुरथल की आएगी तो मैं चाहता हूं वीरेंद्र के अलावा और कोई जाए। क्या मनदीप को जाना चाहिए? क्योंकि वीरेंद्र एक अच्छी फॉर्म में है और मनदीप के पास जब वो 3 खिलाड़ियों में थोड़ा सा और अच्छे भी नजर आते हैं और उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए अच्छा रहेगा। नवीन, अब ये सिर्फ मुकाबला मेरे लिए टेम्परामेंट का हो जाएगा। राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम लेना बहुत जरूरी है, बट यहाँ वीरेंद्र का जाना, नवीन, क्या लगता है एक सही निर्णय है वीरेंद्र का? It might not be right. I'll tell you why. Because Mandeep is any which way is not in that kind of a form. Even if he had gone in, you might not know. He might have got a touch point, or even if he's Mandeep gone outside the bench, it was Virender on the mat who would have brought you back. Now look at this. Super tackle in a do-or-die race. We discussed about this. Don't send your top performing raider in the do-or-die race. Astromi makes a comeback.
Who is back? Stormy Sudhakar, गोकुल लक्कन्नन, जीनियस गोकुल लक्कन्नन, जो एंगल के साथ जाते हैं। फिर से वही हुआ, डिफेंडर के ऊपर से रेडर ने जंप लगाने का प्रयास किया, दोनों एंगल्स पर जाना। साहिल को इससे पहले जंप में वहां पर निशानाबूद किया था, और साहिल अगर मौजूद थे नवीन, तो क्या साहिल जैसा खिलाड़ी वहां पर जाना चाहिए था डू और डाई रेड में, क्योंकि वीरेंद्र में वो लेजी एलिगेंस नजर आता है। जब उन पर कवर अटैक करने जाता है या फिर कॉर्नर अटैक करने जाता है, तब वो अच्छा पाते हैं। जब जब उनके ऊपर एंकल होल्ड होता है, तब तब वो थोड़ा सा अपने आप को असहज पाते हैं। पर सुधाकर वापस आ रहे हैं, 5 पॉइंटों की लीड हो चुकी है। ये भी डू और डाई रेड है। क्या नंबर 5 फिर से बाहर जाएंगे, या फिर बोनस चुराएंगे, या फिर टच पॉइंट? Yeah, this was also a discussion with Ilavarasan. He was talking to me before the match. I'll tell you, he said very clearly what Ilavarasan said after this raid as Sudhakar has gone in. Ankle hold, it's got the bonus, and also bonus +1, I think. Bonus Yes, it is. Palli Tusker. Stormy is back, and this Puducherry indoor stadium is erupted. And Ilavarasan told me exactly this, Harshit. We were in a little bit of a discussion of talking, how do you handle a do or die raid, and when Stormy goes in, what happens? And Sudhakar also was listening to our discussion, me and Ilavarasan. Ilavarasan very clearly said, see, I want Sudhakar to go, do or die raid when there are 5 or more defenders, not less. When there is a bonus available or there are 6 defenders, only then I want him to go in. But Sudhakar said, no, I can go in and bring any time the points. But he has to understand now this is work. What Ilavarasan, we were discussing it work, and Mandeep again goes back empty-handed. See, that's why we were saying Mandeep should have gone in for that super tackle situation in a do or die raid. अभी भी वो देखिए हड़बड़ी मचा जरूर रहे थे, अफरा तफरी करने का प्रयास था, पर अगर कहीं वो 3 खिलाड़ियों में जाते और वीरेंद्र सबसे बड़ी बात वहां पर मैट पर होते। पर नवीन, अब मैं मनदीप से ज्यादा साहिल को रेड करते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत है, बस खुद पर थोड़ा सा विश्वास जताना है। और देखिए, ऐसी सिचुएशन से निकलकर जब आप परफॉर्म करते हैं, तभी आप एक बड़े खिलाड़ी की पहचान पर अपने आप को कायम कर पाते हैं, शीर्ष पर अपना आवाम कायम कर पाते हैं। साहिल शायद जा रहे हैं, बट अभी समय है थोड़ा सा वार्तालाप करने का, स्ट्रेटेजीज बनाने का, क्योंकि अब समय है स्वराज स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। नवीन ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट टेम्परामेंट को किस तरह से घोषित करेगा? आने वाले 7 मिनट होंगे इस मुकाबले की कहानी के सबसे बड़ा क्लाइमेक्स। As Rajkumar Saab is there in the arena. Yeah. The coach of Hampi Heroes is watching this as Ilavarasan. Right, he just says அவங்களுக்கு தான் third raid. That means Muttal will get their do or die raid first. You just need to be standing there. That's all he says for the Raiders. Kill the time. And when Masanamuthu is not around and he says, Gokulakannan, you stand in the center. He said, Gokulakannan, stand in the center and then cover up the Raider if possible. What is Mohiduda Sahab saying? He says, go, I need raid points. Now he is talking to the Raiders. He says, Jana, Jana, Marke Ana. That's all he said. So there is real importance of the Raiders now to really step up onto this, or else we might see a repeat of that qualifier number 1 even in the finals, Hampi versus Palani. Can Sahil change it? पर नवीन, अभी भी मेरे लिए कंसर्न जो है वो थोड़ा सा डिफेंस पॉइंट्स है। मुरथल मैग्नेट्स ने शुरुआती 10 मिनटों में 4 टैकल लिए थे और अभी शायद उनके 6 या 7 टैकल पॉइंट से ज्यादा नहीं है, तो अगले 20 मिनटों में सिर्फ उनके पास 3 टैकल पॉइंट्स आए। रेडर साहिल अक्सर वो राइट कॉर्नर पर जाकर हैंड टच करने की कोशिश करते हैं। मुकिलन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुकिलन एंकल को किस तरह से पकड़ पाएंगे, क्या टो टच के लिए जा सकते हैं, पर राइट कॉर्नर शक्तिवेल बहुत जल्दी ये टैकल अटेम्प्ट के लिए आते हैं। 7 पॉइंट की लीड, 6 मिनट का समय। नवीन, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है मुरथल के लिए। No, I'll tell you what. The defense should just leave it up on this, and I should be saying Mohituda Shab should bring in even more raiders, sending in more raiders, quick raids. Love Galian, Shubham Marathi. Actually, Love Galian should come in. Love Galian should definitely come in and probably make those raid points, because Mandeep is struggling today, and Sahil, the defense of Palani is not going to go for him. And Sanjeevi, very, very good. He listens to his boss. He listens to that Chanakya of Ilavarasan's coach. And he is doing the same thing, killing the clock. Again on a do or die raid. This time, even watch, the defense will not come to him. And that is Mandeep trying his best, going so deep. And Mugilan says, no, don't come. He's not touched me. Don't come in. Don't come in. And he's slipped inside the lobby. That's a big slip for the Murthal Magnets. Have they slipped out of the semi-finals? Mandeep, this is not your excellence. ये देखिए, it's not cup of your tea. और यहाँ देखिए, वो थोड़ा सा ठहर गए थे और ठहरने के बाद वहां पर लॉबी में अपने आप को जाते हुए नजर आए। सिर्फ वहां पर 5 मिनट का समय शेष है। डू और डाई रेड
सुधाकर एक और 2 और टाई रेड में इनका आना क्या 4 के डिफेंस में थोड़ा सा डिफेंस को मौका दे रहा है कि आइए पकड़िए, पर ये सुधाकर का स्वयं पर कॉन्फिडेंस था। Why do they don't listen to the coach? This is what happens. Coach also is not in favor of this, Swami. 1 point. In a do or die raid, if there are less than 5 defenders, you're not supposed to go there. Great. Me, Ilavarasan, we were in discussion with the same point, Arshit. And we said, see, it's only the coach can only say. It has to be the player who needs to decide and execute. So that was left to Sudhakar at the end of it, and he did not execute. It is going back to that Mandeep, when he stepped inside the lobby. I've seen this for the first time. His left hand was inside the lobby in the slip. So that means he's so not coordinated. What is Virender doing? Do you think this defense of Palani was sleeping? No. They were just acting as if they were sleeping, but they were not. देखिए यहाँ फिर से शक्तिवेल पूरी तरह से वीरेंद्र को एमलेस कर दिया था वहां पर, और वो ताकत का संचार शक्तिवेल ने किया। बट नवीन, सबसे बेहतरीन जो मुझे स्ट्रेटेजी नजर आई है पलनी टस्कर के लिए, जरूर यहाँ पर एक ग्रीन कार्ड दर्शाया गया है वेलू को। ये वो स्ट्रेटेजी सिर्फ 5 के डिफेंस में खेलना, 6-7 में बहुत कम डिफेंस नजर आया है, और 6-7 के डिफेंस में सबसे ज्यादा पॉइंट साहिल और मनदीप लाया करते थे। तो मनदीप और साहिल को पूरी तरह से खामोश करने की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है शायद एलिवर्सन साहब की, कि 5 के हाउस में या 4 के हाउस में खेलिए, और 3 सुपर टैकल, ये मेरे मुताबिक गेम चेंजर सुपर टैकल थे। There they won the war, Arshit. The war was won in the super tackles. That's it, over. And Murtal Magnets could not even look back after that. They've been pushed to the corner every single time, and only one all-out. Remember, there's not even 2 all-outs that was inflicted. Only 1 all-out. Proper strategic play of Kabaddi, and Palani Tuskers today have proved Kabaddi is also played between 2 ears. It's played between your 2 ears and your brain. And now, running and touch, Sanjeev is okay. He will say only 1 point, that's fine. And Swami sits there and just enjoys the game. He's got that 300 much needed running hand touch, and now they will not feel bad on this. You know why? Again, as you said, only 5 defense. या सिर्फ 5 का डिफेंस। मुकेश कन्नन ये सिर्फ अब समय व्यतीत करेंगे, और नवीन क्या अब आप तैयारी कर रहे हैं पलनी वर्सेस हम्पी के फाइनल की। पहला क्वालिफायर पिछले एडिशन में भी हमें यही देखने को मिला था, रावली एरोज उस समय हम्पी से हारा था, बट अब पलनी, देखिए अभी भी मुकाबला बहुत शेष है, 3 मिनट का समय शेष है, और हम चाहते हैं मुर्तल फाउट बैक करे। हम देखना चाहते हैं वो टाई जो हमने काजीरंगा पेरियार का देखा था, जो हमने काजीरंगा मुर्तल का देखा था समर एडिशन में। Yeah, there is an option also of a tie game. All 3 results possible, definitely. Murtal can make a comeback if the Raiders can get points. They are not having an escape route today. And this morning has been a very, very dreadful morning for the Murtal Magnets Raiders. Where are you jumping? There's no escape route. Where is the dash? Where is the dubki? या डुबकी सबसे बड़ी स्किल की वहां पर आवश्यकता थी, क्योंकि अगर हम चेन को ध्यान से देखें तो पहले शायद उन्होंने भांप लिया था कि साहिल जंप करेंगे, और बहुत ऊपर से वहां पर चेन को होल्ड किया था। जरूर थोड़ा सा यहां पर एक इंजरी कंसर्न हो सकता है, बट शक्तिवेल ये छोटी मोटी चोट आपको अपने मंजिल से दूर नहीं कर सकती है। जरूर थोड़ा सा ब्लड यहाँ पर आया है। ओ पर देखिए शक्तिवेल और सभी खिलाड़ियों का, नवीन जब मैं ऐसा देखता हूँ मुझे वो ऑस्ट्रेलियन टीम के ब्रेटली नजर आ जाते हैं, युवराज सिंह नजर आ जाते हैं। वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था 2011 वर्ल्ड कप। Yeah, and also do not forget our own Jumbo, Anil Kumble. Oh, he came into bowl with a broken jaw and picked up Brain Lara's wicket. My God, and that is the story, isn't it? That's the क्या उसे आप कह सकते हैं jaw dropping moment था वो कहीं ना कहीं। He broke the jaw of Brain Lara there, actually, with a broken jaw, because West Indies lost that match because of that wicket. Anyways, now on a do-or-die raid, Mukesh comes in. Let's speak about Shaktivel. Yeah, he's also just spilling the blood down the mat and making sure he's going in for that final to be played out. Do-or-die raid. Can he go in deep? He goes! Finally, some consolation for Sahil. Narwal as he gets that tackle. But not enough, not enough. जी अभी भी देखिए 7 से 8 अंकों की लीड वहां पर है। साहिल ने जरूरी जाकर टैकल किया है, बट रेडर्स का वो गेम है, अब रेडर्स को वाइटल रोल निभाना है। शंकर जरूर शायद ग्रीन कार्ड आएगा, वो एल्बो थोड़ी सी वहां पर, वो येलो कार्ड आया है, येलो कार्ड आया है, नो वार्निंग, सीधा वहां पर बाहर जाना पड़ेगा शंकर को। फिर से रिप्ले अगर हमें ईवीएस डायरेक्टर साहब अगर हमें दिखा सकते, वो एल्बो आया था नवीन, ये हमने देखा था, बट शंकर बाहर जा रहे हैं। कप्तान 2 मिनट्स का सस्पेंशन, ये क्या अब पलनी के पक्ष में मुकाबला जा रहा है। मोहित हुडा साहब थोड़े से नाखुश हैं। Yeah, absolutely.
Again, he got the green card. Before this, there was a warning. And then now, this is the second one. It was a brutal one. Eliminator is saying, ஒன்னு போனா போடு நம்ம பக்வெஸ்ட் வந்தா ஆளு ரெண்டு ஆளுக்கு ரெண்டு ரைட் தான் இருக்குது பக்வெஸ்ட் வந்தா மேட்ச் வின் okay, he says ஆளுக்கு ரெண்டு ரைட், that means மேட்ச் வின் அத பாத்துக்க both the teams have just got two raids each. That's what he's calculating at. And it's not Mukesh Kannan. नवीन, इनमें कोई गलती नहीं है इनकी। अगर ऐसे मुकाबले होंगे तो बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। पर शंकर बाहर हैं, ये चेयर पे बैठे हुए, और जब उन्होंने अपने सर पर हाथ मिला है तो उससे कई सारी स्थिति समझ आती है। पर मनदीप जैसा खिलाड़ी अगर पूरी तरह से ऑफ कलर रहे, फ्लंक यानी कि फेल होते हुए आज नजर आए हैं, बट मनदीप क्या अभी भी कारनामा कर सकते हैं। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मैं बताता हूं, अनूप कुमार, द किंग ऑफ कबड्डी के नाम से प्रसिद्ध, गॉड ऑफ कबड्डी, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट क्या वैसा ही कारनामा कर सकते हैं? फुटवर्क नजर नहीं आ रहा है नवीन। Yeah, today is really not doing well. High five for Gokul Lakaran in only 3 tackles naveen. Shaktivel bhi high five bana chuke hain apna. That is what. Today the Palani Tuskers defense has come to the party. Look at that strong block and take a bow there for Mugilan and Gokul Lakanan's combination. SRM College Chennai and everybody from SRM will be rooting for those friends. They've been playing together from what? Class 5? Super tackle situation. And yes, it might be a super tackle even with 2 minutes of suspension. Even if this is not on, there is 4 defenders on the court. There is 4 defenders. बिल्कुल वहां पर 4 खिलाड़ी मौजूद थे, पर डिफेंस से आप ज्यादा वहां पर 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। रेडर्स का मुकाबला, और देखिए शुरुआत में रेड में अंक लगभग बराबरी पर थे, शायद पहले हाफ में 1 अंक ज्यादा मुरतल के पास रेड में था, बट उसके बाद अगले 10 से 12 मिनटों में जो पलनी का डिफेंस खेला है नवीन, वो मुकाबले को पूरी तरह से बदलाव कर दिया, और इस मुकाबले में बताया कि दे आर रेडी टू प्ले इन द फाइनल्स। पलनी टस्कर्स, संजीवी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ये खिलाड़ी कभी ध्यान नहीं देता है, सिर्फ ध्यान देता है कि टीम को कैसे चलाना है। Captaining for the first time. He's got no captaincy experience before. Now, even if you are inflicting a do or die raid, what is it going to get? Look at the score difference. Yes, it is a do or die raid. Even if Sanjeevi has been caught, it is only 1 point, because Shankar is on a 2-minute suspension, and it is considered that Shankar is on the mat. And as the sound gets higher in this sports arena, because it is under 30 seconds and Palani Tuskers might not lose this, that's what they feel, and the repetition of the eliminator will happen. Sanjeevi goes in under the chain dubki and gets his points as well. Wow. नवीन, दिस इज नॉट द ओनली साउंड, ये ब्लास्ट है, ये ब्लास्टर है। पलनी टस्कर्स का डुबकी आई, और अभी तो देखिए महज औपचारिकताएं बची थी। अगर ये सुपर टैकल होता तो भी ज्यादा वहां पर बदलाव मुकाबले में आता नहीं, बट ये प्रशंसाजनक है, ये अभिनंदनीय है। ये जरूर दृश्य हमारे लिए और हम सभी दर्शकों के लिए मनोहर नहीं है, बट पलनी टस्कर्स का आज ए ग्रेड गेम इतने बड़े प्रेशर सिचुएशन में। पिछला मुकाबला जब ये हारी थी ना हम्पी से, तो प्रेशर में थोड़ा सा अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी, पर अब लगा है कि ये प्रेशर गेम्स के लिए तैयार है। हम्पी हीरोज के कोच अगर यहाँ पर दर्शक दीर्घा में है तो क्या वो सोच रहे हैं, क्या थोड़ा सा चेहरे पर उनकी भी शिकन जाएगी, क्योंकि 2 या 3 दिन के ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जरूर मोमेंटम नहीं होगा, बट फ्रेशनेस जो पलनी ने अपनी फ्रेशनेस लाई नवीन, देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स, जरूर दोनों ही चीजें वहां पर होंगी। No, that's what. See, when Eliminator6 was talking, he said these 2 days of break has helped us, because Sudhakar was playing continuously. He went out with a groin pull. Thankfully, it is not a groin injury. It was just a groin strain for Sudhakar, because he was playing continuously for so long. And now do or die raid. I think Murtal Magnets have given up. I think we should talk about the conclusive talks of Murtal Magnets. We will miss Mohit Uda Saab and his team. They've done really well, but make some noise for Palani Tuskers. They are going in as the second finalist of the Yuva Kabaddi Series' winter edition, and we will have the reputation of eliminator number 1. Take a bow for the sound that's happening in this sports arena. Palani Tuskers versus Hampi Heroes in the finals. ये है ये टीम जो सब कुछ बयां कर रही है, क्या खेली है, क्या लड़कपन दर्शाया है, क्या भूख थी, क्या हंगर थी, और हैंग्री मैन मैं कहना चाहूंगा, हंगर, और जिस तरह से अपने आप में यहाँ पर ये टीम का सर्वस्व दर्शाया।
10 पॉइंटों की लीड से इस मुकाबले को जीता। पलनी टस्कर्स भिड़ेगी अब हम्पी हीरोज के विरुद्ध फाइनल में। पहला ही डेब्यू एडिशन में आते ही पलनी टस्कर्स ने ट्रेडमार्क बना दिया है। वो पूरी तरह से अपनी चिन्ह वहां पर छोड़ दिए हैं और हम्पी हीरोज के बनाम देखिए अभी कौन जानता है क्या यहाँ पर तख्तो ताज भी ले जाए या फिर हम्पी लगातार दूसरी बार एडिशन जीत जाए। I'll tell you what, see, in Eliminator number 1, Humpy Heroes played with 5 defenders. The extra defender ran with only 2 raiders. Today, Palani Tuskers defense have made sure they have come back into this game and they have won the match. So, lot of thinking for Rajkumar Saab. Will he go with the extra defender? Will he go with an extra raider? Because Palani's defense has shown the war can be won and they won the war. Murtal actually had the lead. They came back with all those super tackles. So it's a very, very dicey situation for Humpy Heroes. They cannot go back with the same strategy as they did in the Eliminator number 1. या तो एक डिफेंस समिट राउंड ने ये सिद्ध कर दिया है कि जिस टीम का डिफेंस अच्छा खेलेगा वो टीम मुकाबले जीतेगी और फाइनल तक के सफर पर जाएगी। अब नवीन तैयार हो जाइए। आशीष सहदेव मलिक वर्सेस वहां पर आपको गोकुल लक्कनन होंगे, शक्तिवेल होंगे, साथ ही साथ वहां पर योगेश भैया आपको नजर आएंगे। डिफेंस हैवी नजर आएगा बट सुधाकर की आज फिर से एक ऐसी अदाकारी नजर आई है। ये कारीगर भी है, ये जादूगर भी खिलाड़ी है। प्रेशर सिचुएशन में मुझे लगता है ये 8 या 9 अंक जिन्होंने लिए हैं सुधाकर ने, ये उनके कई सारे सुपर 10 से ज्यादा बेहतर थे इस मुकाबले के लिए। Very much, because although super 10s might not have given them the place in the finals, this 8 points has actually given the Palani Tuskers the place in the finals. There, Virender with the super 10, very good. But look at that, 13 tackle points from the defense of Palani Tuskers. Actually, very, very big difference with the Murtal Magnets' defense and the Palani Tuskers' defense. Nothing in the 8 points. Watch that. Nothing at all. You cannot pick anything. As Saktivel, the 5-pointer, high five for him. And of course, he's coming from Tirupur. He's from Saktivel. He's also an MBA, Agricultural Engineering Gadget. Right. He did his BA Agricultural Engineering. And he is agriculture, this engineered defense very well. और देखिए रॉकेट साइंस कुछ नहीं था पर ये समझना था कि कब किस टीम के मोमेंटम पर हावी होना है। आज गेम ऐसा नजर आया जैसे पलनी के साथ चल रहा हो और पलनी जैसा चाहती है वैसा चल रहा हो, पर इस खिलाड़ी के लिए आप जरूर थोड़ा सा फील करेंगे। प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छा काम किया। 18 रेट में 11 रेट पॉइंट्स पर कहते हैं ना कि छोटे छोटे राइट डिसीजन आपको बड़े मुकाबले जिताते हैं और कुछ गलत डिसीजन आपको मुकाबले हरा देते हैं। डू और डाई रेट में लगातार इनका जाना, हालांकि ये डू और डाई रेट स्पेशलिस्ट है बट अब कंधे पर आपको ये दृश्य नजर आ रहे हैं नवीन, इससे पता चलता है चाहे जीते कोई भी हारे कोई भी, पर कबड्डी हमेशा दिल जीतता है। Very much, because it was Sahil Narwal there. He went out with a light niggle on the toes. As Saktivel got his high five, and he'll be the best defender there. But really well done. That is what the confirmation is. Palani Tuskers versus Humpy Heroes will be in the finals as Harshit is getting ready for the post-match presentation. And this is what it really comes down to. An eliminator number, you cannot even think about these things repeating in life. That is what it is. Winning by 10 points and with defense. The Raiders, yes, they helped out well for Palani Tuskers, but today the defense of Palani Tuskers have come to the foray and they have come to the party big time. What will Rajkumar Saab think? He made sure the qualifier number 1 was won because of the defense was heavy. But today, he has to come out with a different strategy. He has to make sure the more defenders or the more raiders or an equal balance. Oh, that's a confusing state for Humpy Heroes. I really do not want to be in that dugout. This is Navin Chaudhary signing off and just a small little break. Do not forget, come back at 9 p.m. tonight. Humpy Heroes versus Palani Tuskers, live and exclusive on FanCode. Thank you so much everybody for your love and time. We will come back after a short little break for the post-match presentation of Murtal Magnets and Palani Tuskers. As we always say, Murtal Magnets, please come back soon and very well coordinated in the next season. Thank you so much for all the team management and all the coaches and all the players representing Murtal Magnets. You've been given a lot of entertainment to the public that has always loved kabaddi, isn't it? Thank you so much. Let's do a short little break.
enormous victory for the powerful Palni Tuskers to beat Murthal Magnets with a bang. Welcome to the post-match presentation in the last eliminator number 6. And now we would like to thank our partners, our associate partners, Swaraj Tractors, broadcast partner, Fancode, fantasy partner, Dream 11, Physio partner, UEM. In the presentation today, we have Mrs. S. Asha, consultant and strategic consultant. आपका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और एलिमिनेटर 6 के चलिए आइए बात करते हैं आप सभी के साथ। शोभनीय ये मुकाबला था कबड्डी की, जिस तरह से निरुपमता का यहाँ पर पूरी उत्तेजना के साथ, जिस साहिलता के साथ प्राप्त किया है पलनी टस्कर्स ने, उसकी तारीफ करनी बनती है। जिस अंदाज में उन्होंने शुरू किया वैसे ही समाप्त किया। सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन द एलिमिनेटर और मुरथल मैग्नेट्स को हराया 10 पॉइंट की लीड के साथ। सीधा चलते हैं अवार्ड सेक्शन की तरफ। अवार्ड की शुरुआत करेंगे विद द स्वराज ट्रैक्टर्स रेडर ऑफ द मैच। जरूर वर्सेटाइल वीरेंद्र सिंह यहां पर अवार्ड विनर रहे 11 पॉइंट्स के साथ, पर तारीफ करनी होगी इनके खेल की। आइए देखते हैं पॉइंट्स। देखिए कहां से आया था वो विलासपूर्ण प्रदर्शन डिफेंडर्स द्वारा। स्वराज ट्रैक्टर्स डिफेंडर ऑफ द मैच की बात करते तो पलनी टस्कर्स के सुपर पावर हाउस शक्तिवेल को जाएगा ये अवार्ड जिन्होंने बनाए हैं शानदार हाई फाई। और आइए देखिए इनके लाजवाब टैकल पॉइंट्स। एक ऐसा क्षण इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आया था जब पलनी के पास महज 2 खिलाड़ी बचे थे। मसन्नो को सब्स्टिट्यूट किया गया और एक ऐसा पंगेबाज अंदर आया जिसने पूरी तरह से मुकाबले की तकदीर को बदल कर रख दिया और पलनी के झोले में ये मुकाबला डाल दिया। बात कर रहे हैं स्वराज द पंगेबाज ऑफ द मैच की। पलनी टस्कर्स के सुपरस्टार डिफेंडर द जीनियस गोकुल लक्कन्नन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आया और अपना हाई फाई कायम किया। या देखते हैं इनके नए आयाम को। फिनोमिनल गेम। आप सभी भी अपनी एनर्जी डबल कर लीजिएगा क्योंकि अब आएगा बड़ा फिनाले। फिर से वही टीम जो आपको क्वालिफायर 1 में नजर आई थी, हम्पी हीरोज बना पलनी टस्कर्स। मिलेंगे आप सभी के साथ फाइनल के दौरान। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा।